Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of standard 8th. Ateequrrahman, VTC teachers. I very welcome you all students to this MCG VTC online video session. And students, today we are going to learn about statistics. In this topic, we are today observing परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे शुरू में सब डिवाइडेड बार ग्राफ डायग्राम के बारे में। सो हेयर यू कैन सी दैट वी कैन कंपेयर इंफॉर्मेशन इन डेटा बाय सब डिवाइडेड बार डायग्राम in a subdivided bar diagram. Information of two or more constituent in is shown by parts of single bar. तो इसमें बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि आमतौर पर हम तकसीमी सुतूनी तरसीम खाके में जो है तो मोतियात का तज्जियाती मवाजना तकसीम सुतून के ज़रिए किया जाता है और इसमें दो या दो से ज़ायद अज्जा की मालूमात एक ही सुतून के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ाहिर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके लिए ये जो एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है, इस एग्ज़ाम्पल को हम देख सकते हैं। तो इसमें देखेंगे आप द नंबर ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट वुमेन्स लिविंग in 4 villages are given below here. Okay, so show the information by subdivided bar graph is here. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 गांव में रहने वाली ख्वानदा और नाख्वानदा ख्वातीन की तादाद को जो है तो यहाँ पर इस जदुल के ज़रिए ज़ाहिर किया गया है और इस मालूमात की बिना पर हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है तो बार ग्राफ तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों की किस तरह से जो है तो ग्राफ हमें बनाना है। तो उसकी मालूमात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरियली दी है। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ गिवन डेटा इफ़ टेबल इज़ नॉट गिवन first, then draw the x-axis and y-axis on the graph paper. Then third, write the names of the village on x-axis and keeping equal distance between two consecutive bars. And fourth one is show the number of women on y-axis with a proper scale. Then show the total number of women in a village by a single bar, and thereafter you will see that show the number of literate women by a part of the bar by some mark, say gray in color, and remaining part of the bar will represent the bar of illiterate women. Show this part by another mark, and similarly draw the subdivided bars for the other villages. Observe the graph draw for the given data. So in this manner we are supposed to make here the bar graph. Okay, so here you will see that first we have to mark here the x-axis, and then you will see that we have to mark here the y-axis. So we draw the x-axis and y-axis on a graph paper like this. Thereafter write the names of the village on x-axis. So x-axis, the name of the village are A, B, C and D. So we put down the name of the A, B and C here. Thereafter you will see that write the names of the villages on x-axis. So
keeping equal distance between the two consecutive villages. So you will see here. Thereafter, show the number of women on y-axis. So these are 100, 200, 300, 400, 500, 600, and this kind of marking showing the women's on y-axis with proper scale. And now show the total number of women in village by a single bar. So now on single bar you're looking here that there's this light color is showing the literate women and dark color is showing the illiterate women. Okay, so here you will see that this one is from a village. The total women are 770, so we marked it here on 770. So of 770 women, you will see that in the second B village you will see that there are 730 women, so we marked it on 730. And in the C you will see that there are 750, so we marked on 750. Thereafter you will see that this one is 650, so we marked on 650 here. So like this you will see here the A, B and C, D total women by this green graph. And now you will see here the literate women are 540 in A village. Thereafter you are looking here that 440 women from the B village, and then in C village you are looking at the woman 410, sorry 340 women are literate. And D you are looking the woman 460 here, the literate women are here. So here you observe that the women from the dark green colors are the literate women. Okay, these are the literate women which are showing by the dark color. And you will see here that these are the women from green is a woman of illiterate women. Okay, so these are the total women, and among them that these are the light green color is for illiterate women and dark green color is showing the literate woman here. So here like this we can make the bar graph. Okay, so this is a subdivided bar graph you observed here. Now we are doing the practice set 11.1 and its first question. So observe the following graph and answer the question is the first question here of 11.2 exercise. So here is a x-axis, and on that you will see Savita, Saroj, Varsha, Megha and Vaishali, and the y-axis you are observing the 200, 400, 600, 800 and 1000 like this. And thereafter you are observing this kind of
graph on the graph paper. So these are the bar on the x-axis here, and now you can see the saving in April is in light color, and saving in March is in a dark color. This is the saving. Okay, this is a saving like this. Okay, so state the type of the graph. First question is here. Okay, so state the type of graph. So then how much is saving of Vaishali in the month of April is the second question. And the third one, how much is the total saving of Saroj in the month of March and April? Then how much more is the total saving of the Savita than the total saving of Megha? And fifth question is, whose the saving in the month of April is least? Okay, so these are the question. So you are supposed to observe this graph, and then you are supposed to answer the question which is on your screen. So first question, state the type of graph. So your answer will be, this is a subdivided bar graph. Okay, now the second question's answer, how much is the saving of Vaishali on the month of April? So the saving of Vaishali on the month of April is 600 rupees. Okay, thereafter, how much is the total saving of Saroj in the month of March and April? So the total of saving by Saroj in the month of March and April is 800 rupees. Okay, so the next question, how much more is the total saving of Savita than the total saving of Megha? So you will see here the total saving by Savita is 1000, that by Megha is 500. So 1000 minus 500 will be 500 here. Okay, so the total saving by Savita is 500 more than that of Megha. Okay, then the next question is, whose saving in the month of April is least? So the saving of Megha is the least in the month of April. Okay, so these are the answer. You are supposed to observe all these answer in this bar graph. Okay, so you will see here that this y-axis is showing you the saving in the saving is showing in 200, 400, 600, 800 and 1000. Up to 1000 the showing is this y-axis is showing the saving here. Okay, so you will see here that the Savita is saving is this one is the month of April, and this one is the month of March. Okay, this dark area is the month of March, and this one is the month of April. Okay, so you will see here the Savita having the 1000 saving, that by Megha is saving is 500. Okay, you will see here that Megha, here is a Megha, and her saving is around 500. Okay, so you see here that her saving is up 500 because her mark is up to 500 here. Okay, so
like this you can observe and easily you can give the answer of these questions. Okay, now I'll move for the another question here. So on your screen, this is the x-axis and this is a y-axis. Okay, so what suppose we have to do here, here is the number of boys and girls in standard 5th to 8th in ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है तो जिला परिषद के एक स्कूल में 5वीं जमात से 8वीं जमात तक लड़के और लड़कियों की तादाद दी गई है इस जदुल में, और इस मालूमात की बिना पर हमें यहाँ पर तकसीमी जदुल तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th में 6th 7th 8th है, और यहाँ पर 5th 6th 7th 8th है, यहाँ पे बॉयज़ है या गर्ल्स है। ठीक है, तो इनकी टोटल हमने यहाँ पर की है इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ जो है तो जदवल है, टेबल है, और इस मुताबिक हमने यहाँ पर इसकी टोटल की है ना। तो 34 + 17 = 51, 26 + 14 = 40, 21 + 14 = 35, 25 + 20 = 45. So like this you will see the table here, and now on the bar, on the x-axis you are observing here the 5th standard, then 6th, then 7th, then 8th. Okay, these are the standard. The fourth standard is on x-axis, and here is the number of students, 20, then 30, then 40, then 50. Okay, these are the number of students. Okay, now what suppose we have to do here, we are supposed to show this information by bar graph. Okay, so on your screen you are observing that 5th standard is how much boys are there, in 6th standard, in 7th standard. So you are observing in 5th standard that there are students of standard 5th are 34. Okay, so you will see here that the 5th standard boys are 35. Okay, so the mark is on this space. Okay, so like this we can make easily this kind of bar graph. Now 6th standard you are observing that there are 26 students. So you see here, thereafter in standard 7 21 students, so just less just about to the 20, so this one is a 21. Thereafter 8th standard, so there are 25 students, so just you see here that about to the 25 and middle to the 20 between 30. Okay, so you will see here this is a 25 marking. So here we can easily make the graph like this. So on this graph the scale we used here is very important. One thing is to यहाँ पर एक चीज़ जो बतानी रहेगी आपको, स्केल. सो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, है ना. ये हमको यहाँ पे सबसे पहले हमें जब तरसीम बनानी होती है तो सबसे पहले हम स्केल यहाँ पर ले लेते हैं. ओके, स्केल यहाँ पर हमने लिया, वाई एक्सिस हमें यहाँ पर पहले ले लेना होता है. तो आप देखेंगे यहाँ पर x सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर रखा है ना. यहाँ पर आपने देखा 10 स्टूडेंट के लिए एक मार्क है, फिर उसके बाद 20 के लिए, फिर 30,
फिर 40, फिर 50, फिर 60, है ना। तो हाईएस्ट हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास में कितना है, 51 है ना। तो 51 के लिए हमने यहाँ पर 60 तक के मार्किंग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये 51 का फिगर है हाईएस्ट। और लोवेस्ट कितना है हमारे पास, लोवेस्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 14 है, मीन्स अबाउट टू द 10 है ना। तो इस तरह से तो हम यहाँ पर आसानी से इस तरह की ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि एक यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है तो टेबल दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स in the following table, the sapling planted in the year 2016-17 in 4 towns is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. So here is the data of 2016 and 17. So town and year are here: Karjat, Vadgaon, Shivapur and Khandala. So here are the 4 towns, and in 2016 150, here 17, 200. So we made the total of it. So 550, then 450, then 250 is the total. Okay, now अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाउन्स के लिए ले लेते हैं एक्स एक्सिस, और नंबर ऑफ सैपलिंग के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पर हम इस तरह से क्या करेंगे, जो यहाँ पर मकामात हैं उनके नाम हम यहाँ लिख देंगे। करजत है, वडगांव है, शिवापुर है और खंडाला है। ओके, तो अब यहाँ पर दी हुई इंफॉर्मेशन की बेस पर हमें यहाँ पर बार बनाना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो स्केल ले लेते हैं। स्केल अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है तो हमने 100 लिया, देन 200, देन 300, देन 400, देन 500, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर लाइट कलर जो शो कर रहा है 2016 को, और डार्क कलर जो शो करेगा वो 2017 के लिए है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले के दिया हुआ यहाँ पर क्या है, करजत का 150 जो है तो 2016 है, और 2017 के लिए 200 है। लेकिन टोटल आप देखेंगे यहाँ पर कितना हुआ दिया हुआ है, 350 दिया है। तो 350 तक हमें इसे मार्क करना होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद में वडगांव है, वडगांव 550 है, 550 है। तो आप देखेंगे इसे, देखिए 500 के बाद में भी हमें यहाँ पर आगे 550 पर इसे यहाँ पर मार्क करना पड़ा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर हमें 600 अलग लेना होगा इस तरह से। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि 450 दिया हुआ है। शिवापुर, शिवापुर कितना दिया है, 450, यहाँ तक हमने खींच लिया इसे। फिर खंडाला देखेंगे आप, खंडाला कितना दिया हुआ है, तो खंडाला को हम लेते हैं बाद में। पहले करजत देखते हैं यहाँ पर कि करजत में जो है तो 2017 में कितना ये हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2017 का ये यहाँ पर मार्क आप दे सकते हो, कितना है, 200 है ना। तो ये 200 पर आप देखेंगे यहाँ पर कि करजत का मार्किंग जो है तो 200 पर यहाँ पे आना चाहिए, एक्चुअली यहाँ तक आना चाहिए 200, ठीक है। तो नहीं बराबर है, ये 150 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये जो है तो कितने पर रहेगा, ये बराबर 150 पर ही रहेगा। रेड वाला जो है तो ये डार्क कलर वाला 150 पर ही रहेगा, है ना। ये ऊपर करजत 150 है, सॉरी, और 200 जो है तो ये आएगा, ठीक है। तो ये 200 2060 यहाँ पर जो है तो इस तरफ आएगा। 2017 के लिए हमने यहाँ पर जो है तो डार्क स्पेस लिया है, ठीक है। लाइट स्पेस जो है तो 2016 के लिए है, ओके।
फिर इसी तरह से आप वडगांव भी देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद में शिवापुर, फिर खंडाला भी आप देखेंगे, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो काम कर सकते हैं और अपने तौर पर जो है तो ग्राफ आसानी के साथ बना सकते हैं। ओके, तो बहुत ही आसान है बच्चों ये ग्राफ बनाना जो है, तो हम आसानी से इस तरह से ग्राफ जो है तो बना सकते हैं ना। तो स्केल हमें लेना होता है, y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सैम्पलिंग हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ यहाँ पर तैयार हुआ है, ठीक है। याद रखना है आपको कि किस तरह से ग्राफ तैयार किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, इसमें यहाँ पर क्या दिया है, इन द फॉलोइंग टेबल द डेटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स बाय स्टूडेंट्स in 8th standard to commute from home to school is given. Draw a subdivided bar diagram to show the data. यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें जो है तो एक जदूल बनाना है और इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि 3 शहरों में 8वीं जमात के तलबा के ज़रिए स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों और पैदल चल कर जाने वाले तलबा की मालूमात जो है तो दी हुई है। इस मालूमात को ज़ाहिर करने वाला तकसीमी सुतूनी तरसीम यहाँ पर हमें तैयार करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या करना होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसमें यहाँ पर टोटल की है, ये जदूल जो है जो देख रहे हैं आप ये दिया हुआ है, इसकी टोटल हमने यहाँ पर की है। टाउन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, पैठन है, यौला है और शाहपुर है, ठीक है। तो साइकिल से जाने वाले हैं, ये ऑटो रिक्शा और बस से जाने वाले हैं और पैदल चलने वाले हैं। तो ये टोटल जो स्टूडेंट्स है उनकी यहाँ पर तादाद यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको 3 किस्म की तादाद है, तो इससे हमें 3 अलग अलग तरीक़ों से 3 अलग अलग डिज़ाइन से इसे शो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन फुट है, बाय बस और ऑटो है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो और दिया हुआ है वो क्या है, यहाँ पर ऑन फुट है, साइकिल है और बाय बस है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से हमने इसे यहाँ पर शो किया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह से स्केल लेना होगी, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर हमें स्केल लेना होगी और डिज़ाइन हमने यहाँ पर क्या ली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन फुट के लिए ये डिज़ाइन चॉइस किया हमने, बस और ऑटो रूट के लिए हमने ये डिज़ाइन यूज़ किया है और साइकिल के लिए ये इस तरह से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पैठन में जो है तो 1000 बच्चे हैं, ठीक है, सॉरी 5000 बच्चे हैं यहाँ पर पैठन में। तो इसमें से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ तक जो बच्चे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, यहाँ तक जो मार्क की हुई है वो बच्चे किस तरह से आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि पैठन में जो है तो ये डिज़ाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर किसकी डिज़ाइन है, ऑन फुट है ना। तो ऑन फुट आने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, 1000। फिर बस और ऑटो रिक्शा से आने वाले बच्चों की तादाद कितनी है, तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बस और ऑटो रिक्शा से आने वाले हैं। फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑन फुट हो गया ना, ऑन फुट जो है तो आने वाले बच्चे कितने हो गए यहाँ पर, तो वो देखेंगे आपकी 1000 है ना। तो ये यहाँ पर हम साइकिल से आने वाले बच्चे हैं तो इनकी बड़ी तादाद है, साइकिल से आने वाले बच्चों की तादाद जो है तो काफ़ी है ना। हम देखेंगे ये हमने यहाँ पर साइकिल से आने वालों की तादाद लगानी चाहिए थी, ठीक है, ये साइकिल से आएगी। तो साइकिल से आने वाले बच्चों की तादाद यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं और ऑन फुट आने वाले बच्चों की तादाद जो है तो वो 1000 एक्चुअली, तो वो यहाँ पर आएगी इस तरह से, ये वाली,
ठीक है, ये तादाद जो है। इसी तरह से हम यहाँ पर नीचे भी देखेंगे दूसरी और मार्किंग, तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो यहाँ भी हम देख रहे हैं इसमें सेकंड ग्राफ में यहाँ पर कि पैदल चलने वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पर यौला में। तो यौला में आप देखेंगे कि पैदल चलने वाले बच्चे, साइकिल पे चलने वाले 1500 है ना, तो ये 1000 प्लस 500, ये 500 पे पैदल चलने वाले बच्चे हो गए, ये सॉरी साइकिल से चलने वाले बच्चे हो गए। फिर उसके बाद 500 बच्चे हैं ना, तो ये 500 बच्चे यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो ऊपर बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये स्पॉट हमारा हो गया पैदल चलने वाले बच्चों का, ठीक है। इस तरह से ऐसे यहाँ पर शाहपुर में भी आप देखेंगे, शाहपुर में जो है तो साइकिल से जाने वाले 500 बच्चे हैं, साइकिल से जाने वाले 1250 बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर मार्किंग देखेंगे हम। फिर इसी तरह से बस और ऑटो से जाने वाले बच्चे कितने हैं, 500 है ना, तो ये यहाँ पर इनकी मार्किंग देख रहे हैं हम। फिर इसी तरह से 500 बच्चे जो है तो पैदल चलने वाले हैं, तो यहाँ इनकी मार्किंग है इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे टोटल मार्किंग कितनी हो गई है, तो टोटल मार्किंग हो गई है 2250 की, है ना, ये हो गई 2250 तक के मार्किंग, ओके, लाइक दिस। तो बच्चों हम इस तरह से जो है तो अलग अलग कलर, अलग अलग डिज़ाइन को लेकर भी जो है तो स्केल बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर अभी पैदल चलने वालों के लिए किस तरह की डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ की है, साइकिल पे चलने वालों की डिज़ाइन कैसे यूज़ की है, वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो कोशिश कीजिए इसे और इस तरह से बनाइए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।